Welcome to a new episode of the YIF podcast. My name is Sudhanshu. I'm the founder of Young India Foundation. I want to kind of start this conversation about what it means to be a young candidate and a young female candidate for both of your cases and contesting. And this is a really good equation because if you don't know, YIF didn't exist in what we were doing when Tanisha ran. So Tanisha ran completely independent without support and did an amazing job. Whereas with Inderpreet, she was also completely independent, but we were able to help out in the processes here and there, and as well as campaign for her. So we were able to apply what we do to her campaign. And it will be interesting to see the kind of dimensions and the contrast that we figure out with both cases. So without further ado, I want to ask, really basic question, why did you decide to run? Because I was frustrated with the system. Yeah. That's the basic, that's what went through my mind. That was the basic motivation to run. Because even though I didn't think that I was ever going to run, the main thing about that was that everything's so bad right now that I would probably be the best option if I were to be selected, right? That's what was going through my head. So I was like, abhi karte hain, karke dekh lenge. I'm young, I can try. And that's what being young is, right? You have that time to try. You have that courage to do things. So I took a leap of faith and I just ran for something I believed in, which is basic amenities such as roads and water and electricity. Same question. Inderpreet, आपने क्यों लड़ा? I want change. Simply, I want कि youngsters जो है ना वो आगे निकल के आए. वही same persons, वही बंदे, वही system, वही चल रहा है. तो एक छोटी सी कोशिश करके देखते हैं कि हाँ जी क्या change वो करके दिखाते हैं और क्या आप कर सकते हो. मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ जी पढ़े लिखे बंदे कुछ नहीं कर सकते हैं या पढ़कर बंदा बहुत कुछ कर सकता है. एक होता नहीं कि हाँ जी लेवल बंदे का कि हाँ जी ये जनरेशन ये करके दिखा सकती है वो सिस्टम. Now, अब दोनों ने क्या two keywords, एक तो change और एक young, right? But youngsters को लेकर आना, I am young, I can do this, I can bring change. ये बातें तो मैंने किसी और से भी सुनी है, and that is the entire political circle. वही बातें वो करते हैं. हाँ, युवा देश को बदलेंगे, युवा ये करेंगे, युवा वो करेंगे, youth वो करेगा. Why doesn't it happen? Because they need somebody to run their errands. That's why युवा ये करेंगे और युवा ये करेंगे कि बाद में at 50 years maybe they'll get a space in the party. लेकिन in their 20s or in their 30s nobody's giving them that space. Lack of doing work now. Exactly. Yeah. They want them as volunteers. That's what they want them as, and that's it. They won't ever give a chance. I haven't heard of a politician. I'm sorry if I'm wrong about this, but I haven't heard of a politician who's given his seat up for somebody who's younger. Yeah. Unless it's their own son or daughter. That's true. Yeah. Now, okay, so yes, they want their people to run errands, but then why do we elect them? Why do we keep going on with the entire process? Because we are the voters, right? And when there's a huge demographic that's in our favor, they are not the ones that are excuse my manners, are not the ones that make up this country. It's the majority of young demographic. तो फिर क्यों बार वही politicians आते हैं, वही politicians हम youth को errands run कराते हैं, रैली में ये जाते हैं? Why? एक फियर नहीं होता लोगों में, वो बैठ चुका है कि हाँ जी अगर हमने इसको ना बनाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. और मैंने स्टैंड किया वही ब्रेक चेन को ना ब्रेक करने के लिए कि हाँ जी अब तोड़ के रखना है. मगर वो ब्रेक करना कितना मुश्किल है? वो बहुत मुश्किल है बिकॉज सबसे पहले हमारी जो सोसाइटी है वो ये सोचती है लड़कियां क्या करें. लड़कियों के लिए ना एक सोच बन चुकी है कि लड़कियों की शादी होनी है, ये होना है, वो होना उनके साथ. तो उनके लिए राजनीतिक कुछ नहीं है, उनका फ्यूचर ही स्पॉइल उनका. बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी. दूसरा एक यंगस्टर्स है, इसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है. तो जिनके पास एक्सपीरियंस उन्होंने क्या कर दिया, करप्शन कर दी. हमारी कंट्री से बाहर वाले बंद इधर से दूसरी कंट्री के लिए जाने के लिए तैयार है. उधर से इधर क्यों नहीं आते थे? इतने अच्छे हो, इतना डेवलप कर चुके हो, तो क्यों बाहर से क्यों नहीं इधर आते? हमारे ही बंदे उधर पे जाते हैं. Now, I want to ask more about the campaigning. Election लड़ना, campaigning करना, we know it's hard. We know it's even more difficult by election को जीतना. But एक बार अपना पैर अंदर करना, regardless if you're from a party or if you're not from a party, मगर अपने आप को जो nomination process है वो कितना मुश्किल है? I'll go with that. So, because I did the nomination process without YIF, I know it's very, very difficult.
It's easier than most people think it is, right? But it's very difficult in the sense that the system and the people in the system don't want to see you succeed. Okay, 1 second. With YIF, Yeah. was the nomination process any better? मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ एक सिस्टम हुआ था जो नो ड्यू सर्टिफिकेट होता है, वो मेरे को मिल नहीं रहा था. तो मैंने कॉल की यंग इंडिया फाउंडेशन के, जैसे कि आप ही को कॉल की थी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है. तो आपने बोला कि इंदर आपने पीछे नहीं हटना है, वी विल हेल्प यू. एंड डेफिनेटली आपने जो किया और अगले दिन डीसी का ऑर्डर आया कि नहीं, नो ड्यू सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है. तो उस वजह से मेरा नॉमिनेशन फाइल हुआ. अदरवाइज मेरे को 2 दिन ऐसे लटकाया रखा कि हाँ जी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. 21 अच्छा बताते हैं अभी आपको पूछ के. Now, is this common? Is this common? If it's common with us, I bet it's common, but it's not common for people who are already Yeah. running. Because they have their boys doing this stuff. Yeah, वो yeah. जो youngsters जिनको वो लेके आ रहे हैं, वो खड़े होते हैं लाइन में. जिस लाइन में मैं खड़ी थी मेरी एनओसी लेने के लिए, Yeah. वो उस लाइन में खड़े और थे. उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी. उनके लिए अच्छा नॉमिनेशन के लिए अच्छा ये लीजिए आप. हाँ, 2 मिनट में काम करके गायब. हमें हर दिन के लिए न्यू डॉक्यूमेंट होता था. एग्जैक्टली. Yeah. मेरे को पूरी अगर फर्स्ट दिन स्टार्ट कर रही हूँ मेरी नॉमिनेशन प्रोसेस फॉर वीक, राइट? Yeah. अगर मैं फर्स्ट डे स्टार्ट कर रही हूँ, मैं लिस्ट लेके आ गई हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है, आई हैव टू लाइक गेट दिस डन, ठीक है? I knew एंड मेरे को ये नहीं बताया जा रहा है एनओसी चाहिए ग्रामीण बैंक. गुड़गांव में 3 ग्रामीण बैंक है, कौन सी बैंक से चाहिए? अब वो तो हमें नहीं पता. अब मैं तीनों बैंक गई हूँ. दैट्स ऑफ कोर्स आई वाज वेरी लकी कि सेकंड बैंक ही वो था जिसमें मुझे जाना था. बट मैं तीनों बैंक गई क्योंकि somebody has to be that stubborn to beat the system, right? Yeah. कि अगर मैं बोल दूं कि दोबारा प्रॉब्लम एग्जैक्टली, अगर मैं बोल दूं कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, मेरे को ग्रामीण बैंक भी नहीं मिलता, अगर मैं सिस्टम के ऊपर रिलाई करूं टू हेल्प मी, इट्स नेवर गोना हैपन. Maybe this is too basic of a question, but something that what you just said is you have to be too stubborn to beat the system. First of all, why do you have to be stubborn? Second of all, why do you have to beat the system? Beat the system in the sense like the people that are sitting in the system are making it so rigid. Why? Because if people there in the system are telling me आप क्या कर रहे हो, बहुत डर्टी होता है ये, आप इतने पढ़े लिखे हो, बाहर से वापस आए हो, आप अपनी लाइफ के साथ क्या क्या कर सकते हो, these are the kind of things the people are telling me. क्योंकि सब लोग देखते हैं ना बैठ के सारे नॉमिनेशन प्रोसेस, you are attaching your degrees in it, you are attaching everything. They're like कि झूठ नहीं बोल रही है, of course बाहर से आई है, फिर यहाँ पे क्या कर रही है? इवन मेरे को भी लॉ स्टूडेंट हूँ यार, जुडिशरी अप्लाई, पॉलिटिक्स किस गंदगी में पढ़ रहे हो? अच्छा गंदगी है तो फिर आप क्यों कर रहे हो? Questioning is this. नहीं, that's the, and people go out to vote. Why aren't you voting for the right people then? लोगों को यही नहीं पता हम वोट करने जा रहे हैं, किस मुद्दे के लिए वोट करने जा रहे हैं, ये नहीं सोचते. वोट अच्छा जी, वोट की आप हमारा काम करवा दोगे, हाँ जी करवा दोगे, तो फिर हम आपको वोट दे देंगे. आपको पता ही नहीं वो कौन से काम करवा सकते हैं. Nobody knows that. बिकना नहीं होता सिस्टम की, हाँ जी वोट दे दी, पैसों के लिए दे दी, ड्रिंक्स के लिए, गैस सिलेंडर्स मिल रहे हैं. अच्छा लोगों को ये श्योरिटी हो जाती है कि हाँ जी हमें इतना वो मिलेगा, घर के लिए जगह मिलेगी. अरे आपको वो दिलासे देते हैं, कौन दिलाता है, कौन देगा आपको, ये सोचते ही नहीं है. Okay, so kind of want Blind to voting. conclude things. I want to talk about जो हम काम कर रहे हैं अभी. जी Okay, तो आपने हमारा काम देखा है, जी आपने काम करा है, right? You're part of YIF Delhi, you're leading it, etc. ये जो system है, एक तो can it actually bring about change? Change in terms of can we actually bring about candidates like Inderpreet and make it at least easier to become part of the electoral process? And second of all, do you think it's sustainable? What do you think will happen? Do you think things or there will be barriers in the middle? The barriers are just other young people who don't really believe in this idea. That's the only barrier. Because what we're doing is absolutely great because we're letting people who didn't have a chance before to get into the system now. अगर पहले से कोई, अगर मेरे जितना कोई stubborn नहीं था, वो 3 ग्रामीण बैंक नहीं जा रहा, तो वो पहले बहुत लोगों का होता है, बहुत लोग people just drop out of nomination because it's हमारे लिए स्ट्रगल, बाकियों के लिए स्ट्रगल खत्म. Exactly. तो अगर YIF is making that process easier, the candidate who's going to stand now, like Inderpreet, is going to have it easier in the sense, at least now she can worry about the real issues she's going to concentrate on. She can worry about, oh, let's go talk about this and this and this. Whereas my whole week, where I could have spent it campaigning, I was just like going through office to office, अपनी nomination process पूरी करने के लिए. Right? 1 week is huge in an election, right? Especially if you decide to run late, like that could have made the difference. But obviously, because I had to complete the documents, I didn't have YIF's help, and it's sustainable because if enough people believe in this idea, we're going to make a change that will be irreversible.
मेरा भी मतलब यही सिस्टम था कि हाँ जी, जब मैंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, मेरे को तभी YF का नहीं पता था, तो जब नॉमिनेशन का हुआ तो थोड़ा सा था। उसके बाद मैंने फिर से सोचा कि नहीं, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। जिस हिसाब से लोग कमेंटिंग कर रहे थे तो ठीक है, मैंने सोचा। फिर YF की कॉल आई, इंदर रिजल्ट जो भी होगा, क्या हो गया रिजल्ट, एटलीस्ट आपने स्टेप लिया, दिस इज द बिग थिंग। एंड स्टिल मैं हार कर यहाँ बैठी हूँ YF के साथ, और वो मेरा साथ दे रहे हैं। दिस इज द बेस्ट। पर हार कर नहीं बैठे ना, Yeah. you already made that win by taking that Yeah. step. क्योंकि और कौन कर रहा है? Yeah. Somebody told me, I can't remember who explained this to me, but somebody said like, how many people even decide to fight elections in India? Yeah. They, in a population of billions, it's probably like lakhs, which is a very small percentage if you really think Yeah. about it. So Yes. you're one amongst those people that have taken that step independently. Yeah. So I think you're a winner. And also, the winning also maybe might come at in another 3-4 years. Exactly. Right? Yeah. The best thing कि एटलीस्ट जो लोगों की मेंटेलिटी और सोच थी वो एक चेंज हो Exactly. That's a win. गई। Yeah. So you have won. And we'll make Yeah. sure you win next time. Yeah, definitely. All right. So that was it for this brief podcast. We'll be back next time with another candidate or another individual part of the process of YF to kind of explain a little bit more into how YF works and what we're doing. Thanks for joining us. And you can follow us on all our social media. We're on Facebook, Instagram, Twitter, Young India FDN. Again, that's Young India FDN. Thank you so much.